Good evening to all of you. Are you audible? So in last class we finished a topic that is unification of Italy, the process of unification of Italy, and today we are going to discuss the topic that is process of unification of Germany. Okay, and lastly I will also discuss that why these two topics are important. Okay, they are the part of class 10th NCERT book World History and all this. I will also display the chapters so that you could relate the relative importance of all these topics. Now the topic which we are going to cover today is unification of Germany. Unification of Germany. This is the topic that we are going to cover. Now, before entering into this topic, we must know some of the basic ideas so that we could understand the concept. So first I will discuss some basic concepts, and with the help of those basic concepts we will enter into this topic, that is unification of Germany, right? First we need to know the meaning of Rhine Confederation. This is one word that we must need to understand. Rhine Confederation. This is related to Napoleonic efforts. Okay, this is related to this topic, that is Napoleonic efforts during this period 1804 to 1814 15. Okay, so this we need to understand. Rhine Confederation 1806. This concept is very important. Then we need to know about the role of R1, R2 and R3 in the process of unification of Germany. Mainly the role of R2 and R3 will be related here. Mainly R2 and R3. These two concepts will be related here. Okay. Now we also need to understand that why this demand was raised, that several smaller territories of Germany, okay, should be integrated into one separate nation. So I'm going to start with this concept one by one. We will learn. There is also one concept, that is Zollverein, that we need to understand. I will also discuss with you the concept of Zollverein. We need to know about some of the important rulers in Germany. Important rulers in Germany, their name, some of the important rulers in Germany who are related with this process, and a chancellor. The name was Bismarck. Bismarck was a chancellor. So first I will discuss the basic concepts here, then I will enter into the topic. Okay. Rhine Confederation. We are using this word Rhine Confederation. Rhine Confederation for what? So the concept is very simple. I am displaying a slide here so that you could relate it better, and this is the slide. For example, we are going to first discuss Rhine Confederation. Okay, so what was the Rhine Confederation? So this Rhine Confederation came into existence in which year? So the answer is, this is 1806. Okay, this confederation came into existence in which year? 1806. Which year this came into existence? 1806. ये क्या हो रहा है? Okay. विजिबल हो पा रहा है वैसे?
यहाँ कुछ तो विजिबल हो पा रहा होगा. Is it clear, Ravi? I am reading, just it will be clear that this confederation came into existence in which year? So that is 1806. Now you can easily relate this year, 1806. This is a year during Napoleonic era. Napoleon's era was 1804 to 1814 15, and we all know that Napoleon completed many important military conquests. For example, okay, Roman Empire or Holy Roman Empire. There were two parts. One is Eastern Roman Empire and the second is Western Roman Empire. So Napoleon did what? Roman Empire is symbol of what? Conservatism, absolute monarchical rule, dominance of religion. Religious influence are dominant here. So what Napoleon will do? Napoleon will conquer many of the smaller states who were the part of Holy Roman Empire and will make it what? The extended territorial boundary of France. So this Napoleon will do. Napoleon will extend his French Empire, and what he will do? He will conquer many of the smaller territories. For example, if you will count, so this Roman Empire at that time was having more than 962 smaller states and principalities. More than 962 smaller states and principalities. 962 से भी ज़्यादा थे smaller states and principalities. And Napoleon will do what? Napoleon will invade these territories and he will be able to conquer more than 239 states and territories out of 962. 962 से कितने को conquer कर लिया? More than 239. Okay. So this Roman Empire was already declining. And when Napoleon will do his military conquest and when he will challenge the authority of the Roman Empire, it is said that, okay, Napoleonic military conquest were like the last nail in the coffin of Holy Roman Empire. मेरी बात समझ गया ना? ताबूत में आखिरी कील क्या थी? नेपोलियन का मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. Got it? Okay. So Roman Empire was declining and military conquest of Napoleon ensured this process. And that's why it is also said that, right, this point, that Napoleonic military conquests in Europe, Napoleonic military conquests in Europe were like the last nail. Napoleonic military conquests in Europe were like the last nail, like the last nail in the coffin of, in the coffin of, they were like the last nail in the coffin of, in the coffin of, last nail or final nail in the coffin, final nail in the coffin of Holy Roman Empire. Holy Roman Empire. Got it? Napoleon conquered almost 239 states out of 962 smaller principalities or states were the part of this Roman Empire, Holy Roman Empire. 962 से कितने को conquer कर लिया? About 239. And what he will do? He will further consolidate these states and territories. दोबारा से इनको क्या करेगा? Consolidate करेगा. And consolidation into 16 German states. इनको consolidate करके कितने states बना देगा? 16. So what he did? He reconsolidated, right? This Napoleon did what? Napoleon reconsolidated these 239 German states into 16. Reconsolidated these 239 German states into 16. Reconsolidate कितने में किया? 16 German states में, right? And now he will make what? A confederation of these 16 German states. In 16 German states का क्या करेगा? He will make a confederation of these 16 German states. Confederation of these 16 German states in the year 1806. Okay. Total कितने हो गए? 16 German states. He will reconsolidate it. और ईयर क्या है? 1806. और इसी कॉन्फेडरेशन को हम क्या कहते हैं? राइन कॉन्फेडरेशन, राइट? दिस
This confederation is known as Rhine Confederation. This confederation is known as Rhine Confederation. इसी confederation को क्या कहते हैं? Rhine Confederation. And what will happen later? After 1806, many more new states will join this confederation. और भी states join करेंगे. इसका मतलब नेपोलियन का भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट रुका नहीं है, तांडव जारी है. Write this point that after 1806, after 1806, many new states joined this confederation. Many new states joined this confederation. बहुत सारे नए स्टेट ने इस कॉन्फेडरेशन को ज्वाइन किया. ओके, फॉर एग्जांपल 19, इसका मतलब 16 के बाद फिर कितने आ गए? 19. ठीक है, फिर कितने आ गए? 3. तो इस तरह से धीरे धीरे करते ये हो गया 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन. लेटर इट बिकेम अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. समझ में आया? फर्स्ट 16 विल कम till this year 1806, then further 19 will be added, then further 3 will be added. It means this is what? A kind of unification or not? Is this a kind of unification? And this is the unification of German speaking territories. सारे के सारे German speaking territories क्या हो गए? Unify हो गए. They came together. And now what is the concept here? Again, that is very interesting that in this way many German speaking territories came together. Now this is the confederation. Suppose this is the confederation of these states. And what is happening here? Okay, this is the confederation of these states. And who is the protector of this confederation? इस confederation का protector कौन है? Napoleon. Napoleon was the protector of this confederation, and this is France. Napoleon was the protector of this confederation. ठीक है. Napoleon will promote what? Progressive ideals of revolution. Napoleon will promote progressive ideals of revolution in these states. यहाँ पर वो promote करेगा progressive ideals of revolution को. Progressive ideals of revolution in these states. He will also promote progressive ideals of revolution in these states. Plus what he will do? The rulers will rule in these states. Now they are free from the clutches of powerful monarch of Europe. Austria के control से free. ठीक है? Holy Roman Empire के control से free. The rulers are ruling. In many states, Napoleon will appoint the rulers. If the ruler has to appoint the successor, he will have to take the permission of Napoleon. So basically, Napoleon is directly controlling these areas or indirectly controlling these areas. Indirectly controlling these areas. So this is what? Extended territorial boundary of the Napoleon, and this is also like these are military allies of Napoleon. These are like sister republics of Napoleon. These are like satellite states for France. मेरी बात समझ गए? तो ये सारे states क्या होंगे? They will be like military allies for Napoleon. They will be, इन्हीं को कहा जाएगा क्या? Military allies. They will be called what? Sister republics. Sister republics of France. इनको हम कह सकते हैं, they can be called as satellite states of France. हम ये भी कह सकते हैं. And we can also say that they are the part of extended territorial boundaries of France. France के extended territorial boundary का हिस्सा है. Clear? And Napoleon claims to be the protector of these territories. Now, do you think that when Napoleon will bring continental policy, he will ask the rulers of these states to follow his order? Berlin Decree and Milan Decree. कहेगा मेरी बात माननी पड़ेगी, और वो मानेंगे कि नहीं? मानना उनकी मजबूरी है. Because who gave birth to this confederation? Napoleon gave birth to this confederation. याद है ना कॉन्टिनेंटल पॉलिसी? जो रूलर्स कभी नेपोलियन के फैन हुआ करते थे, जो लोग कभी नेपोलियन के फैन हुआ करते थे, वो आगे चल के नेपोलियन के अगेंस्ट हो. अच्छा बताओ, इस टेरिटरी का एक और फायदा है. वो फायदा क्या है? दिस टेरिटरी कैन इट सर्व लाइक अ बफर जोन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रांस अगेंस्ट अदर एडवर्सरीज. यस, मान लो अगर ये फ्रांस है और ये एक्सटेंडेड टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ फ्रांस है,
and these people are supporting Napoleon. So this will also serve like a strategic buffer zone. ये एक बफर जोन का काम करेगा, एंड इट विल प्रोटेक्ट फ्रांस फ्रॉम इट्स एनिमीज. ये फ्रांस को इसके एनिमीज से प्रोटेक्ट भी करेगा. इट विल प्रोटेक्ट फ्रांस फ्रॉम एनी इट्स एनिमीज, लाइक एनी फ्यूचर एग्रेशन फ्रॉम ऑस्ट्रिया, प्रशा, रशिया. यही तो इसके दुश्मन थे ना, आपको पता है. तो किसी भी तरह के फ्यूचर एग्रेशन से फ्रांस को प्रोटेक्ट भी करेगा. So that is the idea of Rhine Confederation. It will protect France from any kind of future aggression. So this is the change that Napoleon introduced on the political map of Europe. मेरी बात समझ गए? मैप तो बदल ही दिया उसने. जो पहले होली रोमन एम्पायर का हिस्सा था, अब वो नेपोलियन के एक्सटेंडेड टेरिटोरियल बाउंड्री का हिस्सा है. इतने बात आपको समझ में आई? Now what will happen in 1815? After the defeat of Napoleon, Napoleon's era will end in which year? 1814-15. So in 1815, what we see, Vienna Concert, Vienna Convention. यहाँ पे हम क्या देखते हैं? Vienna Convention. 1815 में क्या है? Vienna Convention. Vienna Convention से क्या होगा? 1815. You all know. All these changes will be declared null and void. Now these territories which have already experienced a kind of freedom like thing, freedom जैसा कुछ feel किया, क्योंकि देखो, all these territories were sharing what? Common culture, common languages, common ethnic ties, so they all came together due to efforts of Napoleon. सब नेपोलियन के एफर्ट की वजह से साथ आ गए थे. Got it? Okay? और ये बताओ, ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ पे प्रमोट होगा कि नहीं? Multiple custom barriers will be removed or not? So economic prosperity also came due to the effort of Napoleon. They were sharing common languages, common culture, okay? And what will happen? Multiple custom barriers will also be removed, and in this way, these territories have already experienced what? Okay, smooth trade and commerce. Okay, the trade and commerce that was not delayed, the trade and commerce that was not very much expensive. They have already experienced the progressive ideals of revolution. But what happened in 1815? Vienna Convention did what? Vienna Convention introduced old order back. Old order back. Old order back. Old order back का मतलब क्या हुआ? कि now these territories will again be divided and distributed among powerful monarchs of Europe. It means now they are again subordinated. और ये क्या है? ये सबऑर्डिनेशन कल्चरल बैरियर भी है कि नहीं? बताओ, कल्चरल बैरियर है. पीपल स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, ये चला गया ए को, ये चला गया बी को. So this is what? Cultural barrier. Barrier in trade and commerce. Okay. So at this point in 1815, regressive changes were introduced during the Convention of Vienna or Vienna Congress. In Vienna Congress, what happened? Regressive changes were introduced. Regressive changes were introduced. Okay. And these German territories now were again fragmented. Now these German territories were again fragmented, divided and distributed, divided and distributed, divided and distributed to the powerful monarchs, to the powerful monarch. ठीक है, powerful monarchs of Europe. ठीक है, तो बहुत सारा टेरिटरी किसके कब्जे में आ जाएगा? प्रशा. नाउ प्रशा विल control many territories. Then Austria will also control many territories. और इस डिवीजन से फ्रांस को भी कुछ टेरिटरीज मिलेंगी. ठीक है, ऑस्ट्रिया, प्रशा, फ्रांस सबको कुछ कुछ मिलेगा, बंटवारा होगा तो. और व्हाट अबाउट ग्रेट ब्रिटेन? ग्रेट ब्रिटेन का यार देखो, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे ट्रेड एंड कॉमर्स करना है. बस इतना इंश्योर कर दो कि फ्रांस दोबारा पावरफुल ना हो पाए. फ्रांस को वीक करो ताकि इन फ्यूचर वो बैलेंस ऑफ पावर को चैलेंज ना कर पाए. इतनी इच्छा है ग्रेट ब्रिटेन की. मेरी बात समझ गया? तो आपको समझ में आया राइन कॉन्फेडरेशन, व्हाट नेपोलियन, व्हाट आर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन. ठीक है, नाउ दीज एरियाज वेर अगेन डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पावरफुल मोनार्क्स ऑफ यूरोप. दिस इज वन कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ if we look at this
map, you can relate the things better. Okay, एक बार मैप से देखते हैं जिससे आप शायद ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे. Now, look at this map. This boundary line which has been created with the black color, okay, indicates what? This indicates, okay, Rhine Confederation. यही एरिया किस चीज़ को दिखलाता है? Rhine Confederation को दिखलाता है. It's more clearly visible here. This entire area, these are smaller states or territories or not? Look at the map. Smaller states and territories. Okay. All these areas were controlled by whom? Napoleon. Now देखो ये क्या है? फ्रांस है. और ये ग्रीन कलर टेरिटरीज क्या है? राइन कॉन्फेडरेशन है. नाउ यू टेल मी दैट फॉर फ्रांस, डू यू थिंक दैट दिस एरिया विल कंट्रोल एज दिस एरिया विल एक्ट लाइक अ बफर जोन? ये बफर जोन का काम करेगा क्या? ये फ्रांस को प्रोटेक्ट करेगा प्रशा से? आंसर इज यस. विल इट प्रोटेक्ट फ्रांस फ्रॉम ऑस्ट्रिया? द आंसर इज यस. ठीक है. तो दिस इज ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर नेपोलियन ऑल्सो. नेपोलियन के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का भी मामला है ये. ठीक है. ये बफर जोन का काम करेगा. दिस एरिया विल प्रोटेक्ट फ्रांस फ्रॉम इट्स एडवर्सरीज, इट्स राइवल्स, दैट इज प्रशा, दैट इज ऑस्ट्रिया. ठीक है. यहाँ पे क्या है? इटली, जो आप देख रहे हो. ठीक है. तो दिस इज व्हाट? राइन कॉन्फेडरेशन. इसके बाद देखो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की जो स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. लुक एट दिस मैप. अभी उतना बेटर समझ में नहीं आएगा until unless I will discuss the entire concept here. Okay, so all these territories here later became what? All these territories later became Germany. All these territories later unified in the form of Germany. ठीक है. ये सारे आगे चल के जर्मनी बने हैं. यानी कि ये देखो जितने ये कलर्ड टेरिटरीज है ना, all these were unified. ये सारा यूनिफाई हुआ. This part was unified in the form of Germany. This part comes under Germany. This part comes under Germany. This part comes under Germany. It means at different time interval this will take place. And we have to discuss that process. यहाँ पे क्या है? फ्रांस है. फिर फ्रांस के बगल में एक नया स्टेट आएगा जो क्या होगा? जर्मनी. और ये क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया. बेसिकली ये जो जर्मनी यूनिफाई हुआ है, प्रशा प्लस सम अदर टेरिटरीज विल बिकम जर्मनी. Prussia plus some other territories will become Germany. वही Germany होगा. So that we will discuss. Now let's discuss some concepts again. Then we will enter into the process. Map आपको याद हो जाएगा. There is no any problem. तो वियना कांग्रेस introduced regressive changes. अब देखो यहाँ पे फिर से एक process को relate करो. वियना कांग्रेस, that is 1815. It introduced ancient regime again. Ancient regime again. And this ancient regime was introduced in France plus other areas of Europe also. जो भी extended territories और boundaries of France था, उन सब जगहों पे regressive regime आ गया. But what we see in France, we see two revolutions. One revolution in 1830 AD and the second revolution in 1848 AD. दो revolution देखने को मिलता है. One is what? 1830 AD and the second is 1848 AD. These revolutions are progressive revolutions or not? So the answer is progressive revolution. Progressive revolution. अब कहानी क्या है? देखो, one country is Prussia, and here also German speaking people were living. German speaking people were living in Prussia also. इसके बाद एक दूसरी कंट्री है. The name of that country is Austria. This is more powerful. And here also who is living? German speaking people are living. German speaking people are living. Plus there are many smaller territories or the areas where German speaking people are living. इसके अलावा भी there are many smaller territories or the areas where all these areas are indicating what? German speaking people. All these are what? German speaking people. German speaking people are living. Here this word is symbolic. When I say German speaking people, it means I am talking about the people who are sharing common cultural heritage, right? Common ethnic practices, cultural practices. तो ये सारा का सारा. अब एक बात बताओ, when R2 and R3 will take place, this is progressive revolution. प्रशा में क्या है? Absolute monarchy. प्रशा में क्या है? Absolute monarchy. ऑस्ट्रिया क्या है? गब्बर सिंह. Okay, architect of Vienna Congress. ऑस्ट्रिया itself was architect of Vienna Congress. यही तो था चीफ आर्किटेक्ट. मेटरनिक, गब्बर सिंह तो यही है.
plus these are other German territories. Now, the German people will be filled with a sense of nationalism. French Revolution means promotion of nationalism, promotion of a kind of sense of oneness, promotion of a kind of sense of यूनिटी. अच्छा, कुछ टेरिटरीज किसके कंट्रोल में है? फ्रांस ने भी कब्जा रखा है कुछ सारी टेरिटरीज को. नाउ दीज जर्मन स्पीकिंग पीपल will start thinking that if all these German speaking territories are united, then what will happen? We will have a larger diplomatic identity. We will have a greater political identity. Plus, if all these territories are united into one German nation, Germany will one of the most powerful country of Europe. Plus, trade and commerce within these territories will be promoted. Multiple custom barriers will be removed. Germany यूरोप का एक पावरफुल नेशन बन सकता है. बैलेंस ऑफ पावर किसके फेवर में आ सकता है? जर्मनी के फेवर में. अब लोग ये सोचना शुरू कर देंगे. And they are filled with this idea, progressive idea of revolution. Now, will they oppose absolute monarchy as setup? Yes. Will they demand for individual rights? Yes, they all will do. तो रिवॉल्यूशन फ्रांस में हो रहा है और उसका असर कहाँ हो रहा है? जर्मन टेरिटरीज. Revolution taking place in France, 1830 revolution taking place in France, 1848 revolution taking place in France, and what is happening? Its effects can be seen, its influences can be seen in German territories. Okay, now German people are discussing what? The idea to get unified. This is the importance of French Revolution. Got it? Now the German people are discussing what? The idea of political unification of these territories. The idea of political unification of these territories. They are discussing to bring a progressive and modern political regime in these countries. वो कह रहे हैं इन कंट्रीज में क्या करो? एक प्रोग्रेसिव और मॉडर्न पॉलिटिकल रिजीम भी लेके आओ. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम. और वो प्रॉब्लम क्या है? समझ में आ रहा है आपको? स्टोरी की तरह सारी बात समझ में आ रही है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इन हिस्ट्री. ठीक है, अगर आप समझ जाओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? नाउ द पीपल आर डिस्कसिंग. सपोज हम सब लोग जर्मनी के लोग हैं, वी ऑल आर जर्मन नेशनल्स. ओके, एंड वी आर डिस्कसिंग कि देयर शुड बी वन जर्मनी. ओके, तो व्हाट वी विल डिस्कस? क्या डिस्कस करेंगे? अब देखो क्या डिस्कशन होगा. सपोज आप इस स्टेट के रहने वाले हो, इस टेरिटरी के रहने वाले हो, तो विल डिस्कस कि इफ जर्मन विल बी यूनिफाइड, so German speaking people will brought under the ambit of one territory. It means unification means what? Prussia plus Austria plus other German states. तो दूसरा बच्चा क्या कहेगा? कहेगा भाई ऑस्ट्रिया इज गब्बर सिंह. ऑस्ट्रिया वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ वियना कांग्रेस. अगर ऑस्ट्रिया को अपने साथ ले लोगे तो फिर सपना पूरा नहीं होगा प्रोग्रेसिव मॉडर्न पॉलिटिकल सेटअप का. मेरी बात समझ गया ना? दिस क्वेश्चन इज क्वाइट नेचुरल और नॉट? इफ यू थिंक ऑफ यूनिफाई जर्मनी, यू विल हैव टू थिंक यूनिफिकेशन इन टू वेज. ओके, देयर आर टू मेथड्स बाय विच यू कैन यूनिफाई जर्मनी. दो मेथड्स हो सकते हैं. पहला मेथड क्या हो सकता है? राइट, ओके. बिगर स्टेट्स क्या है इसमें बताओ? वन बिगर स्टेट इज प्रशा एंड द सेकंड बिगर स्टेट इज ऑस्ट्रिया. The remaining states are smaller states. Now there could be two possibilities. यहाँ पे दो possibility हो सकती है. The first is, write this, concept of little Germany. One possibility could be the concept of little Germany, and the second possibility could be the concept of greater Germany. One concept could be what? The concept of little Germany, and the second possibility could be the concept of greater Germany. Now what is the concept of little Germany? तो देखो little Germany का concept क्या है? That unification will be done, and how this will be done? So Prussia plus other territories, Prussia plus other territories will become Germany, and in this process what will happen? Austria will be excluded. इसमें ऑस्ट्रिया को नहीं शामिल करना है, बिकॉज ऑस्ट्रिया इज गब्बर सिंह. गब्बर सिंह को ले आने पे वो सब मामला गड़बड़ कर देगा. ठीक है,
Austria will be excluded. This is the concept of Little Germany. दूसरा opinion क्या है? What is the second opinion? That great concept of Greater Germany. It means what? Prussia plus Austria plus all smaller territories, German speaking states will be considered as Germany. तो ये concept हो जाएगा Greater Germany का. This concept will be Little Germany. Okay, so there are two kind of concepts here. One is the concept of Little Germany and the second is the concept of Greater Germany. ठीक है. Now what will happen? Revolution 3 take place in France. In which year? 1848. And after this revolution in Germany, in Frankfurt, a parliament of all these states will be organized. ठीक है, अभी डेमोक्रेसी नहीं है, but this is symbolic. It means the representative of all these states will be assembled at one place. That place is Frankfurt, and that is famously known as Frankfurt Parliament in 1848. और Frankfurt Parliament में क्या डिस्कस होगा? It means read this word, that is Frankfurt Parliament. Frankfurt Parliament 1848. This is very important event in world history. Okay. So what will happen? Under the influence of R3 in France, under the influence of R3 in France, under the influence of R3 in France, what will happen? All German speaking states, all German speaking states will be states and their representatives, all German speaking states and their representatives will be invited to Frankfurt. उन सबको कहाँ बुलाया जाएगा? Frankfurt. To discuss what? To discuss the future strategy of unification. To discuss the future strategy of unification. कि जर्मन स्टेट्स का यूनिफिकेशन कैसे होगा? ओके, इसको डिस्कस करने के लिए 1848 में फ्रैंकफर्ट में all German speaking states and their representatives will be invited. सबको बुला लिया गया. That is known as Frankfurt Parliament. And here, which concept will be discussed? The concept of Little Germany and the concept of Greater Germany. Both these concepts will be discussed. Prussia will come or not? Yes, Prussia hero hai. Austria will come or not? Yes, Austria will also come. Other states representatives will come? All will come. And what will be discussed? The concept of Little Germany and Greater Germany. And finally, the majority votes were in the favor of the concept of Little Germany. ठीक है? Majority votes were in the favor of the concept of Little Germany. Here, the majority votes were in the favor of concept of Little Germany. Little Germany के फेवर में majority votes होंगे. Majority votes will be in the favor of concept of Little Germany. इसका मतलब क्या है? Austria will be included in this process or Austria will be excluded from this process? Austria will be excluded from this process. So what will happen here? Greater Germany concept was rejected. It means now Austria was excluded from this process. Austria को बाहर कर दिया गया. Austria was excluded from this process. And what will happen? Okay. Now, a German Confederation of states will be formed here. Okay. Here what will happen? Austria will be excluded and a German Confederation of states will be formed here. German Confederation of states will be formed here. यहाँ पे क्या होगा? German Confederation of states form होगा. And now in this confederation, इस confederation में क्या होगा? Prussia is the big B, सबसे बड़ा बॉस कौन है? Prussia. Plus there are other states, दूसरे states हैं. This is what? German Confederation of States that came into existence in Frankfurt Parliament 1848. इसी को कहते हैं German Confederation of States. मेरी बात समझ गया?
अब यहां से यूनिफिकेशन प्रोसेस के लिए सबसे बड़ा एनिमी कौन हो जाएगा? हु विल बी द एनिमी फॉर दिस प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन? ऑस्ट्रिया. नाउ टेल मी वन थिंग, विदाउट डिफीटिंग ऑस्ट्रिया विल द यूनिफिकेशन बी कंप्लीटेड इन टेक्निकल सेंस? नहीं, ऑस्ट्रिया को तो हराना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया में कौन लोग हैं? जर्मन स्पीकिंग पीपल. So without defeating Austria, technically, okay, this unification will not be practically possible. So who will be the main enemy? Austria. अच्छा, एक और एनिमी होगा, कौन? फ्रांस. कुछ टेरिटरीज किसके पास पड़ी हुई हैं? फ्रांस के पास पड़ी हुई हैं. तो यानी कि अगर जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा करना है तो इस फिल्म का हीरो कौन है? प्रशा. गॉट इट? इस फिल्म का सबसे बड़ा विलन कौन है? ऑस्ट्रिया. दूसरा सबसे बड़ा विलन कौन है? फ्रांस. ठीक है, तो इसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगा. दिस प्रोसेस will get started. Now let's come to some facts here. Okay, let's discuss a few facts, informations. I hope you understand the Frankfurt Assembly and the important developments that took place in this Frankfurt Assembly. Okay, now look at this slide. The Frankfurt Parliament. What was the Frankfurt Parliament? Now you can easily understand that the Frankfurt Parliament was called to discuss reforms. Which kind of reforms? Many reforms were needed because the states were fragmented. Okay, where symbolizing the ancient regime at that time, and it was an attempt to draft a constitution for a unified Germany. It means they were there to make a blueprint for the unified Germany. इसलिए इकट्ठा हुए थे. This was seen as the best way to stop the political unrest. Why it has been written that to best way to stop the political unrest? Because the people in these states are filled with the ideas of revolution. लोग एकदम revolution के प्रभाव में पागल हो रहे थे. Okay, the messages were reaching from France. Okay, so this was the best way. ये जो chaos आ गया है, people are demanding to bring the progressive ideas of revolution. इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे हैंडल किया जाए, इसको सॉल्व करने के लिए Frankfurt Assembly was okay. Now the constitution completed. A constitution will also come here, okay, in 1849. Okay, and the German states were to be united as German Empire headed by a German emperor. इसका मतलब क्या है? The German states, किस स्टेट की बात कर रहा हूं? प्रशा प्लस अदर स्मॉलर स्टेट्स, वो सब एक साथ होंगे. और उनको लीड कौन करेगा? उनको लीड कौन करेगा? जर्मन एम्परर लीड करेगा. ठीक है, अभी भी एम्परर ही लीड करेगा, क्योंकि जब प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन कंप्लीट होगा उसके बाद प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल रिजीम आ सकता है. मेरी बात समझ गए? So he will lead. Now the second point is government would be provided by an elected parliament. Now this Frankfurt Parliament is saying that there will be emperor plus an elected parliament. It means which model it is advocating? Absolute monarchy or constitutional monarchy? Exactly, Frankfurt Parliament is advocating for what? Constitutional monarchy. That एक emperor होगा और there will be a you can say elected parliament. The government would represent the population of all states. It is talking about constitutional monarchy. The new German Empire would replace the existing Bund. It means पहले का जो भी system था, that system will be replaced by this new German Empire. And what is this new German Empire? Plus Prussia plus other smaller states is the new German Empire. But ये complete technical sense में जर्मनी नहीं है. जब तक ऑस्ट्रिया को नहीं हराओगे, जब तक फ्रांस को नहीं हराओगे, जर्मनी आपका कंप्लीट बनेगा नहीं. नाउ द क्राउन वाज ऑफर्ड टू प्रशास फ्रेडरिक विलियम IV. अब ये कहा गया कि इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ओके, हु विल बी द एम्परर ऑफ जर्मनी? So the Prussia ruler Frederick William IV will be the emperor. Got it? This is what Frankfurt Parliament and the important developments that took place in this Frankfurt Parliament. But here what has been written? The Frankfurt Parliament and the attempt to unify Germany through political reform failed. It means whatever has happened in 1848, it did not have sufficient outcomes. Why? The reason is that Frederick William was not a strong enough leader to unite Germany. Why Frederick William was not powerful leader? There is a reason. Okay, Frederick William was himself a conservative ruler. वो खुद ही एक conservative ruler था. And here what you are deciding?
that there will be a confederation. सारी कॉन्फेडरेट यूनिट्स मिल के बॉस किसको मान लेंगी? फ्रेडरिक विलियम को। फ्रेडरिक विलियम नाराज हो जाता है, कहता है कि मुझे ऐसा सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा मुकुट नहीं चाहिए जो कीचड़ में से उठा के मुझे दिया गया हो। उसके कहने का मतलब क्या है कि देयर आर सो मेनी स्मॉलर स्टेट्स एंड दे आर विलिंगली ऑफरिंग मी द पोजीशन ऑफ द एम्परर, सो दिस इज लाइक व्हाट, दिस इज लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ अ क्राउन फ्रॉम द गटर। ठीक है, भड़क जाता है वो। ठीक है, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यस, दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिसीजन दैट वाज टेकन हियर, ओके, दैट वी विल यूनिफाई। ये सारी लिटिल जर्मनी वाली बातें सारी समझ में आ जाएंगी, बट ये टेक्निकल सेंस में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का कोई नेसेसरी आउटकम यहाँ पे नहीं है। गॉट इट? नाउ दिस इज व्हाट फ्रेडरिक विलियम। नाउ व्हाट वी सी हियर, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देन again we will take help of slide. Okay, now I am coming to the next concept here. This is clear, Frankfurt Parliament is clear, Rhine Confederation is clear. Now I am asking you some question that what are the different factors? The third concept here is what are the different factors that promoted or that motivated, that promoted or motivated, okay, or that encouraged the idea of process of unification of Germany. वो different factors कौन से हैं which encouraged, motivated or promoted the idea of unification of Germany? ये कॉमन पॉइंट कल मैंने आपको बताया था, वही पॉइंट क्या करना है, रिपीट कर देना है. व्हाट विल बी द पॉइंट्स? यू ऑल नो दिस. एग्जैक्टली यहां से शुरू करो. इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्रेसिव आइडियल्स ऑफ रेनेसा एंड एज ऑफ एनलाइटनमेंट. इसका असर होगा कि नहीं? देखो, कॉमन पॉइंट्स को यूज करते हुए आंसर लिखना है. वही पुरानी बात है. विल देयर बी इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? यस और नो? इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हाँ ये भी होगा. इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. क्या R1, R2, R3 का इन्फ्लुएंस होगा? द आंसर इज यस. इन्फ्लुएंस ऑफ R1, R2, R3, इसका भी इन्फ्लुएंस है. ओके, एंड व्हाट अबाउट नेपोलियनिक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स? यस और नो? यस, देयर विल बी एन इम्पैक्ट. नेपोलियन ने क्या किया था? ओके, इनडायरेक्टली ही डिड दिस यूनिफिकेशन टास्क, अनकॉन्शियस माइंड से उसने कर दिया था. तो रेड दिस, नेपोलियंस एफर्ट इन यूरोप. नेपोलियंस एफर्ट in Europe. Can we say that Frankfurt Parliament 1848 also plays an important role? Yes, this also plays an important role. Frankfurt Parliament 1848 also plays an important role, because what has been discussed here? The concept of Little German and Greater German, and finally the concept of Little German was approved here. Okay, the concept of Little German was approved here. Can we say that in the promotion of this idea, Vienna Congress भी एक factor हो सकता है? Yes, Vienna Congress 1815 ये भी factor हो सकता है, because Vienna Congress ने क्या किया? Regressive change लाया, और उसकी वजह से क्या हुआ? अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म. ठीक है, लोगों के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स और भी ज्यादा इंटेंस हो गए. तो वी कैन से दैट वियना कांग्रेस ने क्या किया? रिग्रेसिव चेंजेस इंट्रोड्यूस किया. इट इंट्रोड्यूस्ड व्हाट? रिग्रेसिव चेंजेस, एंड ड्यू टू विच व्हाट हैपेंड? सो वी सी upsurge of nationalism. Due to which we see what? Upsurge of nationalism. This will also happen due to this upsurge of nationalism. Okay, got it? Do you think that the process of unification of Italy will also inspire the process of unification of Germany? दोनों तो simultaneous है ना. जर्मनी का प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन किसको इंस्पायर करेगा? इटली को. और इटली वाला किसको इंस्पायर करेगा? जर्मनी को. तो यू कैन ऑल्सो से हियर दैट द प्रोसेस ऑफ unification of Italy was also inspiring, the process of unification of Italy was also inspiring or motivating the process of unification of Germany. Okay, it was also inspiring or motivating, okay, the process of unification of Germany.
इतनी चीजें हो गई. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट टुक प्लेस इन 1848. रूलर नाराज था बट फिर भी, okay, what will happen here? Okay, he agreed to introduce liberal constitution. इस बात के लिए अग्री कर जाता है, तो राइट दिस, he agreed to introduce liberal constitution. liberal constitution लाने के लिए he was agreed. And the ruler of Prussia, emperor of Prussia, here which country we are talking about? Prussia. Here the emperor of Prussia is also ready to provide leadership. Here the emperor of Prussia is also ready to provide leadership. Prussia का emperor leadership provide करने के लिए भी तैयार है. And this is important or not? Yes, you need a leader for this process of unification. Now Prussia is the leader. Prussia का emperor क्या बन गया? Leader. Now, why he becomes the leader or why he is ready to provide the leadership? Leadership क्यों provide कर रहा है? इसके पीछे भी एक reason है. And what is the reason? If many more territories will be unified with Prussia, so Prussia will have a, okay, greater diplomatic identity. It will emerge as a more, you can say that, powerful country. It will have it will be diplomatically more powerful. And what about trade and commerce? It will further be promoted or not? Yes. तो यूनिफिकेशन के बाद प्रशा पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा. प्रशा की डिप्लोमेटिक आइडेंटिटी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी और प्रशा में ट्रेड एंड कॉमर्स पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगा. So obviously he will choose for this, and that's why he has decided to provide the leadership. Okay, so right here, reason for providing leadership. What is the reason for providing leadership? Why Prussia is providing leadership? Reason for providing leadership. क्या है reason leadership provide करने का? So right, point 1. Okay, Prussia will emerge as a more powerful country than before. Prussia will emerge as a more powerful country than before. Prussia, okay, will emerge as a more powerful country than before. Okay, bracket में लिख लेना, because it will have larger territories. That is, Prussia plus other territories will be unified, because it will have larger territories. It will have larger territories. Prussia plus other territories, right? Plus, write this, larger diplomatic identity or greater diplomatic identity. Greater diplomatic identity. Greater diplomatic identity. And right next, okay, prosperous trade and commerce due to removal of multiple custom barriers. Prosperous trade and commerce due to removal of multiple custom barriers. Okay, removal of custom barriers. और फाइनली सिस्टम क्या आ गया यहाँ? प्रशा, विलियम 4. व्हाट इज द सिस्टम? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. दिस इज द सिस्टम नाउ. हु इज लीडिंग? प्रशा इज लीडिंग नाउ. प्रशा इज लीडिंग नाउ. हु इज द रूलर हियर? ओके, so that is Frederick William IV is the ruler here. Frederick William IV is the ruler here. Now the name of the rulers here is very much confusing. So first I will discuss name of some of the rulers and then I will enter into the topic. वहाँ ज़्यादा confusion हो जाता है. So let's discuss the name of some of the rulers in Germany. Okay. This is only to make a good understanding. बहुत डिटेल में नहीं जाना है. Rulers से कोई question नहीं आता, but still we need to know, right? Okay. For example, देखो, we are talking about this ruler ना. देखो किस किस रूलर के अंडर में. फर्स्ट राइट दिस नेम, राइट दिस नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट जर्मन रूलर्स. ऐसा एक लिस्ट बना लो, नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट जर्मन रूलर्स, बिकॉज while reading the books some confusion arises. That's why I am discussing this. Name of some important German rulers. जितना इंफॉर्मेशन बताऊंगा उतना ही लिखना, ये भी पूरा नहीं जानना है. राइट, पॉइंट 1, फ्रेडरिक विलियम 1. फ्रेडरिक विलियम 1. फ्रेडरिक विलियम 1.
And what we need to write here? Name of some important German rulers, that is Frederick William I. Okay, read this. He was the king of Prussia. He was the king of Prussia. And then he was the king of Prussia. Okay. During this period, देखो 1713 to 1740 he was the king of Prussia. 1730 से लेकर 1740 तक he was the king of Prussia. Got it? He was the king of Prussia. 1713 to 1714. Now write next important name, that is Frederick William IV. Frederick William IV. ये remarkable rulers हैं. These are the most important rulers. Okay. 1840 to 1861 फ्रेडरिक विलियम फोर. वैसे पहले वाले को आप रिमूव भी कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है ना. राइट दिस नेम 1840 टू 1861. दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाई? देयर इज अ रीजन. देखो यहाँ क्या होता है, R3 प्लस व्हाट वी सी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. व्हाट इज द ईयर? 1848. हु इज द रूलर? फ्रेडरिक विलियम फोर. यही तो हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रशा किंग वाज फ्रेडरिक विलियम फोर. 1861 तक ये रूलर था. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में क्या है, फ्रेडरिक विलियम फोर के बारे में, ठीक है. राइट, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट दिस. फ्रेडरिक विलियम फोर अपॉइंटेड बिस्मार्क एज प्रशाज मिनिस्टर. ठीक है, ये बिस्मार्क को प्रशा का मिनिस्टर बनाएगा 1851 में. देखो 1851. बिस्मार्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है. तो ही अपॉइंट्स बिस्मार्क एज प्रशा मिनिस्टर. ये अपॉइंट्स बिस्मार्क को प्रशा का एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर बनाता है. इट मीन्स नाउ प्रशा इज एसोसिएटेड विथ, सॉरी, नाउ बिस्मार्क इज एसोसिएटेड विथ प्रशा's political system. He is a minister. Now write next name. Next name is, write this, William First. He is popular by this name, that is William First. William First के नाम से popular है. It is also written as Wilhelm I. बुक में लिखा जाता है विलियम और विल्हेम जर्मन में. सो बोथ दीज टू वर्ड्स आर पॉपुलर, विलियम फर्स्ट और विल्हेम वन. और ये कब से कब तक रूलर है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? तो देखो 1861 से लेकर 1888 तक रूलर है. राइट दिस, 1861 टू 1888 ये रूलर है. और जर्मनी का यूनिफिकेशन कब होता है? व्हेन द यूनिफिकेशन वाज डन, द ईयर इज 1870-71, बेसिकली 71. तो देखो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी completed in this year, that is 1870-71. So who was the ruler of Germany at that time? This person, William I. ठीक है, William I. And when he becomes the ruler, he made Bismarck the chancellor. Right, this chancellor. Bismarck को क्या बना दिया? Chancellor. And he gave Bismarck the task to complete the process of unification of Germany. इसने बिस्मार्क को ये जिम्मा दिया था. Got it? So Wilhelm I gave what? Bismarck. He made Bismarck the chancellor, and Bismarck was given the task to complete unification of Germany. Bismarck was given the task to complete unification of Germany. Unification of Germany को complete करने का task किसको दिया गया? Bismarck. Now the complete name of Bismarck here is what? Okay, देखो. Now look here. The complete name of Bismarck is Otto von Bismarck. First we'll discuss some information, then I will enter into the topic. This is Bismarck. ठीक है, Otto इसका नाम है, घोड़े बैठा हुआ है. ठीक है, Otto von Bismarck. ये वो Otto नहीं है. Right? This is Bismarck. देखो बिस्मार्क जाना जाता है अपनी डिप्लोमेसी के लिए. इन इटली हु इज नोन फॉर हिज डिप्लोमेसी? कवर इज नोन फॉर हिज डिप्लोमेसी. ठीक है, until Bismarck is alive, Bismarck will be able to maintain peace in Europe. लेकिन जैसे ही बिस्मार्क मरेगा, when Bismarck will die, his successors will not be able to handle the diplomacy, and this will create chaos in the world. This will be one reason for the First World War. तो बिस्मार्क बहुत important topic है. Right, his foreign policy is very much important. And what are some important points about Bismarck? So here it was a Prussia's politician. Prussia का politician है. Right, from 1871 to 1890 he served. Okay, he served as the chancellor.
चांसलर के रूप में है। बेसिकली 1871 में चांसलर का पोस्ट आता है, बट द इंपॉर्टेंट टास्क ही वाज गिवन इज इन 1861। 1861 से इंपॉर्टेंट टास्क है। 1851-52 से वो क्या रहा है, ही इज सर्विंग एज अ मिनिस्टर। ओके, तो बहुत लंबा टाइम उसने दिया प्रशा को। ओके, सो ही डिड व्हाट, ही यूनिफाइड 39 इंडिविजुअल स्टेट्स इनटू वन जर्मन नेशन इन 1871। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, बिस्मार्क को क्या कहते हैं, आयरन चांसलर और आयरन मैन। और इंडिया में किसको कहते हैं आयरन मैन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यू ऑल नो द नेम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वाई, बिकॉज व्हाट ही डिड, he completed the task of integration of princely states। 550 से ज्यादा प्रिंसिपल प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उन्होंने भी तो यूनिफिकेशन किया। ही ऑल्सो डिड व्हाट, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ऑल्सो डिड व्हाट, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, ये बात आप समझ गया ना। तो बिस्मार्क इज मेन आर्किटेक्ट इन जर्मनी एंड वल्लभ भाई पटेल इज मेन आर्किटेक्ट इन इंडिया। ओके, एंड ही इज very famous as the Europe's most influential statesman. Okay, so here we have to discuss this topic also, Bismarck also. Now you are familiar with some of the names here. Okay, these names will come again and again, but I will use the word Prussia's ruler for this purpose. Okay, we will not take special names here, and while writing GS answers you can use the simple word the ruler of Prussia. मेरी बात समझ गया ना। जीएस में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में भी यू कैन राइट द रूलर ऑफ प्रशा, द रूलर ऑफ प्रशा, ऐसे लिख दो। ठीक है, कंफ्यूजन की जरूरत क्या है, काम को आसान रखो हमेशा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ हाउ दिस टास्क ऑफ यूनिफिकेशन विल बी कंप्लीटेड। नाउ दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज, राइट दिस, हाउ द टास्क ऑफ unification will be completed, how the task of unification will be completed, will be completed। एक तरफ चल रहा था यूनिफिकेशन ऑफ इटली, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू, और यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ इटली किसकी लीडरशिप में था, सार्डिनिया प्लस पीडमोंट। एंड हु वाज द मेन विलन हियर, मेन विलन वाज ऑस्ट्रिया। यहाँ पे भी मेन विलन कौन था, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया वाज गब्बर सिंह। यहाँ क्या हो रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हु इज द मेन हीरो हियर, प्रशा, Prussia is the hero here. Prussia is leading the process. Plus the main villain is Austria again. Main villain here is Austria again. Austria is the Gabbar Singh. Austria Gabbar Singh. ठीक है, ऑस्ट्रिया में जर्मन स्पीकिंग पीपल आर देयर, तो आपको ऑस्ट्रिया को डिफीट करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक योर स्टेट्स, जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया। नाउ व्हाट इज हैपन हियर, अब यहाँ पे देखो एक सबसे जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि when you compare the power and the strength of, when you compare, make a comparison between the power and the strength of Sardinia, Piedmont and Austria, so this Austria was very much powerful। ये क्या था, very much powerful, right? It means Sardinia, Piedmont alone could not challenge the authority of Austria। Sardinia, Piedmont single-handedly could not challenge the authority of Austria। अपनी मिलिट्री को पावरफुल बनाने के बाद भी वो ऑस्ट्रिया को चैलेंज नहीं कर सकते थे। तो व्हाट वाज द की फीचर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ काबूल, टू गेट द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ अदर मेजर यूरोपियन पावर्स इन दिस प्रोसेस। बिना दूसरों से एक्टिव मिलिट्री सपोर्ट लिए हुए ये काम कंप्लीट हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सार्डिनिया, पीडमोंट की पावर और स्ट्रेंथ ऑस्ट्रिया से बहुत कम थी। तो यहाँ पे क्या था, दिस वॉज कंपेरेटिवली मच वीकर, दिस वॉज इन पावर एंड स्ट्रेंथ इट वॉज कंपेरेटिवली मच वीकर। So what was the aim of Kabur's foreign policy? Okay, so Kabur's foreign policy was to get, aim was to get active military help and support, to get active military help and support from major European powers, to give active military help and support from major European powers। कंपेयर करके पढ़ना है इस टॉपिक को, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना, बिना कंपेयर किए भूलने लगोगे। तो यहाँ पे कैबूर की फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्टिव मिलिट्री सपोर्ट।
of other major European powers in fighting with Austria, तभी यूनिफिकेशन हो सकता है, और ये उसने किया था, बता चुका हूं आपको. Now what about this Prussia? When you compare the power and strength of Prussia and Austria, you will find that Prussia was also a powerful country. Austria was also a powerful. And here, Prussia could single-handedly give challenge to the authority of Austria. अकेले निपट सकता ऑस्ट्रिया के साथ, ठीक है. बट उसमें एक कंडीशन है. मान लो मेरी और गिरीश की पावर और स्ट्रेंथ एक बराबर है, और मुझे लग रहा है मैं गिरीश को, ठीक है, हरा सकता हूं. लेकिन मुझे एक बात का डर है कि अगर मैं गिरीश से लड़ाई करने जाऊं और उस समय अगर रवि उनके सपोर्ट में आ जाए, बीजी उनके सपोर्ट में आ जाए, फिर मेरा क्या होगा. मेरी बात समझ गया ना. तो यहाँ पे बात यही है. प्रशा कैन सिंगल हैंडेडली डिफीट ऑस्ट्रिया, बट द कंडीशन इज दैट इफ अदर यूरोपियन पावर्स विल कम इन सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, देन इंटायर इक्वेशन विल बी डिस्टर्ब्ड. ठीक है. यानी कि लड़ाई होनी चाहिए कैसी, अकेले अकेले, बिल्कुल दीवार फिल्म का अमिताभ बच्चन की तरह. अकेले देखो भाई, हिम्मत है तो आओ 1 to 1. ठीक है, ऐसी लड़ाई होनी चाहिए. ओके. तो यहां क्या है, रेड दिस. Prussia could single-handedly, read this, Prussia could single-handedly, Prussia could single-handedly challenge the power and authority, challenge the power and authority of Austria. Prussia could single-handedly challenge the power and authority of Austria. Prussia could single-handedly challenge the power and authority of Austria. प्रशा ऑस्ट्रिया की पावर और अथॉरिटी को सिंगल हैंडेडली चैलेंज कर सकता है, बट द कंडीशन इज दैट इफ अदर यूरोपियन पावर्स विल रिमेन न्यूट्रल इन दैट सिचुएशन. इट मींस व्हाट वाज द एसेंशियल, ये यहाँ पे एक एसेंशियल कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, और ये क्या है, दैट इन केस ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स, in case of neutrality of other European powers, in case of neutrality of other European powers, अगर दूसरे यूरोपियन पावर्स न्यूट्रल हो जाए तो प्रशा कैन डिफीट ऑस्ट्रिया, प्रशा ऑस्ट्रिया को हरा सकता है. नाउ व्हेन बिस्मार्क विल कम, राइट दिस, व्हाट इज द पिलर ऑफ बिस्मार्क्स फॉरेन पॉलिसी, राइट दिस, बिस्मार्क फॉरेन पॉलिसी, व्हाट इज द मेन पिलर of Bismarck foreign policy. Bismarck की foreign policy का main pillar क्या है, write this point, that okay, right, to ensure neutrality of other European powers in case of any conflict between Prussia and Austria. उसकी डिप्लोमेसी इसी बात पे सेंटर्ड होगी. To ensure the neutrality of other European powers, to ensure the neutrality of other European powers in case of any conflict between, to ensure the neutrality of other European powers in case of any conflict between Austria and Prussia, in case of any conflict between Austria and Prussia. Okay, in case of any conflict between Austria and Prussia. ये बात समझ में आया. अब ये फॉरेन पॉलिसी भी देखेंगे. यहाँ पे कुछ आप कंपेयर कर पा रहे हो, who is leading the process here, who is leading the process, what are the important situations here. Here the main diplomat is Cavour, here the main diplomat is Bismarck. Now I will discuss first with you the concept of Zollverein, and then we will enter into the topic. So write this, the concept of Zollverein, the concept of Zollverein. All these are the basic concepts. Once you learn the basics, पूरा topic आपको याद हो जाएगा. The concept of Zollverein. Okay, now let's look at this slide. The concept of Zollverein. Okay, now what is the year here, 1833 to 34, 33-34, the concept of
Zollverein was implemented. And what is the concept of Zollverein we need to discuss here. But one point is very clear here. And what is that point? Okay, if you look here, you find that what is the year 1833 to 34. जब भी कोई ईयर आए तो रिलेट करो इवेंट्स को. R2 कब है? R2 इन फ्रांस कब है? 1830. R3 इन फ्रांस कब है? R3 इन फ्रांस कब है? 1848 AD. क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? Will there be impact of R2 in Germany also? German states also? हाँ. और इम्पैक्ट में क्या होगा वो सोचने लगेंगे कि अगर हम यूनिफाई हो गए, अगर हम साथ आ गए तो फिर कमाल हो जाएगा. तो साथ आने की शुरुआत कहाँ से कर लें? क्या इनके दिमाग में आएगा? इनके दिमाग में आएगा ये वाला आइडिया ज़ोलवेरिन. एंड व्हाट इज दिस ज़ोलवेरिन? दिस इज द आइडिया ऑफ फ्री ट्रेड. ठीक है, आइडिया ऑफ फ्री ट्रेड. दिस इज द आइडिया ऑफ फ्री ट्रेड. किस तरह का फ्री ट्रेड? राइट सम पॉइंट हियर, देन आई विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. राइट दिस. फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे क्या है? देयर आर डिफरेंट स्टेट्स, different German speaking people living in different German states. So this is what? Different states. अलग अलग states हैं. What is the problem? अगर different states हैं तो different custom areas, different custom duties, multiple custom barriers. तो यहाँ पे क्या हो गया? Different custom barriers, multiple custom barriers. Okay. So what will happen? Trade and commerce will be expensive. Trade and commerce क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव हो जाएगा, डिलेड हो जाएगा. एंड दिस विल हैम्पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस रीजन. इससे इस रीजन की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी हैम्पर होगी. ओके. एंड ड्यूरिंग नेपोलियंस एरा दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड व्हाट? द इम्पैक्ट ऑफ बीइंग यूनिफाइड. साथ रहने पे क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है, ये सब इनको पता था. Okay, now what they will do, they will bring this concept of Zollverein, and the concept is that, okay, multiple custom barriers or tariffs will be removed. Okay, there will be one tariff, uniform tariff. Tariff will be collected at one point, and this tariff will be redistributed to these different states according to the size of their population. मेरी बात समझ गया ना? मल्टीपल कस्टम बैरियर्स की जगह फी कहाँ होगा कलेक्ट? एक जगह पे होगा, और उसके बाद इसमें से सबको उसका शेयर मिल जाएगा. और स्टेट्स को उनका शेयर किस बिहाफ पे मिलेगा? ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पॉपुलेशन. ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है. तो यू कैन राइट हियर दैट हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ोलवेरिन मीन्स देयर विल बी अ यूनिफॉर्म टैरिफ. देयर विल बी अ यूनिफॉर्म टैरिफ. और अपने लैंग्वेज में लिखो, ठीक है, डोंट यूज द बुकिश लैंग्वेज. देयर विल बी अ यूनिफॉर्म टैरिफ. ठीक है, राइट. Net tariff will be collected at one point. Net tariff means all custom duty. Net tariff means all custom duty will be collected at one single point. Net tariff or all custom duty will be collected at one single point, and then it will be divided and distributed among different states. And then it will be divided and distributed among different states. Then it will be divided and distributed among different states. Got it? And write one more point. Break करके definition को लिखना है. On the basis of size of their population, it will be divided and distributed, okay, in these states on the basis of size of their population. Now the states are ready. कहा कि भैया पॉलिटिकल यूनिफिकेशन से पहले इकोनॉमिक यूनिफिकेशन कर डालते हैं. मेरी बात समझ गए? दिस इज लाइक व्हाट? इकोनॉमिक यूनिफिकेशन. बिफोर व्हाट? पॉलिटिकल यूनिफिकेशन. नाउ व्हाट विल हैपन इन 1848? 1848 में क्या है? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. इन 1848 व्हाट वी सी? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिल जर्मनी विल बी introduced, will be accepted, will be approved. The concept of little Germany will be approved. अब देखो इससे क्या फायदा होने वाला है? प्रशा प्लस मेनी अदर जर्मन स्पीकिंग टेरिटरीज. ठीक है, इन सब एरियाज में क्या लागू हो जाएगा? व्हाट विल बी
Prussia and all other German speaking states comes under which system? Zollverein system. And which nation is excluded? Austria. So Zollverein system से बाहर कौन हो गया? Austria. Now what we see here is that Austria is excluded from this system. Austria now is excluded or out from this system. अब इसके देखो क्या डिप्लोमेटिक implications हो सकते हैं. Now if trade and commerce will be promoted in this area, what will happen? Economic prosperity will increase or not? Trade and commerce will increase or not? बताओ. Economic prosperity will increase, trade and commerce will increase. इसके अलावा क्या होगा? Interdependence between these states will increase. एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहेंगे, right? This is called economic interdependence. So this will also increase. Economic interdependence between these states will also increase. States के बीच में economic interdependence भी बढ़ेगा. And what about the impact on their diplomacy? Diplomacy में क्या impact होगा? अगर ये ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ प्रोमोट होगा तो बताओ इससे एडवांटेज किसको हो सकता है? ग्रेट ब्रिटेन. ग्रेट ब्रिटेन तो बिजनेसमैन है. अगर यहाँ पे बिजनेस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी तो ऑब्वियसली दे विल हैव गुड रिलेशंस विथ विच कंट्री? ग्रेट ब्रिटेन. अगर आप अच्छा ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हो तो कौन आपके साथ अच्छा रिलेशन बनाने आएगा? ग्रेट ब्रिटेन. ग्रेट ब्रिटेन विल ऑलवेज स्टैंड विथ यू. उसको सिर्फ पैसे से मतलब है. बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं. नहीं, जलन तब होगी जब उसके पावर एंड अथॉरिटी को आप चैलेंज करोगे. क्यों चैलेंज करेगा? जर्मनी. जर्मनी को दिक्कत किससे है? फ्रांस से. जर्मनी को दिक्कत किससे? ऑस्ट्रिया से. ग्रेट ब्रिटेन के साथ ज़ोलवेरीन के थ्रू अपने ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को इंप्रूव करके प्रशा इस बात को इंश्योर कर लेगा कि जब मेरी लड़ाई ऑस्ट्रिया से होगा तो ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में कौन नहीं आएगा? ग्रेट ब्रिटेन. मेरी बात समझ गए? तो विल ज़ोलवेरीन विल हेल्प इन इंश्योरिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट विथ प्रशा एंड ऑस्ट्रिया? हाँ भाई, होगा ही होगा. कितना आसान कॉन्सेप्ट है. सो राइट दिस पॉइंट दैट economic prosperity in this region will be helpful in maintaining economic prosperity in this region will be helpful in maintaining good diplomatic and economic prosperity in this region will be helpful in maintaining good diplomatic as well as economic relations with Great Britain. Good diplomatic as well as economic relations with Great Britain. Right, one more point. In this way, the neutrality of Great Britain can easily be ensured. In this way, the neutrality of Great Britain can easily be ensured in case of any future conflict. Neutrality of Great Britain can easily be ensured in case of any future conflict. In case of any future conflict between Prussia and Austria. Prussia और ऑस्ट्रिया के बीच में कोई भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वहां पे ग्रेट ब्रिटेन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल. ये होगा ज़ोलवेरीन का इम्पैक्ट. गॉट इट? तो अभी क्या चल रहा है जर्मनी में बिस्मार्क के पहले? बिफोर नाउ दिस हैज बीन रिटन हियर. नाउ दिस कैन यूज, you can easily understand. The custom union, it's a like custom union. It include most of the states in the German Confederation, largely dominated at the time by Prussia. It prompted free trade throughout the Germanic area and fostered the strong growth of German industry. Clear? Rail sector also and trade. This union did not include Austria, which later contributed to exacerbating the Austrian-Prussian rivalry for the domination of Central Europe. इसका मतलब ऑस्ट्रिया नाराज भी होगा इससे, दैट यू हैव एक्सक्लूडेड इट फ्रॉम ज़ोलवेरीन. पहले तो आपने क्या किया?
लिटिल जर्मनी लाके उसको एक्सक्लूड कर दिया. देन व्हाट यू डिड? ओके, Zollverein लाके उसको एक्सक्लूड कर दिया. तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रिया विल नॉट बी हैप्पी बाय दिस एफर्ट. ओके, ऑस्ट्रिया इससे नाराज होगा. यानी कि अभी क्या हो रहा है? अच्छा, इसका एक और वो है, कॉन्टेक्स्ट है, दैट इफ इन प्रशा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विल कम. तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से क्या हो सकता है? विद दिस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यू कैन मेक योर मिलिट्री मोर पावरफुल. यानी कि विथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यू कैन डू व्हाट? मिलिट्री एम्पावरमेंट आल्सो. ठीक है, तो ये सब हो रहा था. इट मीन्स इफ आई से दैट ओके, before political unification of Germany, economic unification was done, and this was done with the help of what? Zollverein, custom union. Is it correct? Yes. So write this point. In Germany, before political unification, economic unification was done. In Germany, before political unification, in Germany, before political unification, economic unification was done. Before political unification, what was done? Economic unification was done. Political unification के पहले economic unification किया. It was done before Germany. Clear? Now, when Bismarck will come, Bismarck will say that, Bismarck जो था, Bismarck आते ही क्या कहेगा? This statement is very important. Read this. What Bismarck says here. Right. The great question of the day. Read this statement. The great question of the day. The great question of the day. क्या था great question of the day? Issue of unification of Germany. That was the great question of the day. Write this. The great question of the day will not be settled by means of speech and majority decisions. The great question of the day will not be settled by means of speech, by means of majority decisions, but it will be settled by blood and iron. It will be settled by blood and iron. Is saying that by means of speech and majority decisions. Okay, and the other side by blood and iron. यानी बिस्मार्क क्या थी? उसकी फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन शुड इट बी completed with the help of negotiations and democratic process, following democratic process? He said that no, I don't believe in this. Okay, this should be completed by what? By policy of blood and iron. Blood and iron की policy से complete करना है. And blood and iron simply indicating towards war. 1861, he holds this responsibility. He got this responsibility, and he is giving indication for war. Okay, a full-fledged war between Prussia and Austria. He is giving this indication कि ऑस्ट्रिया को डिफीट करके ही ये हो पाएगा. Okay, the process of unification of Germany will be completed only after defeating Austria. वो ये कह रहा है कि this can be done only after defeating Austria. ये केवल और केवल ऑस्ट्रिया को डिफीट करने के बाद कर सकते हैं. We can do this only after defeating Austria. ठीक है, ऑस्ट्रिया को डिफीट करके कर सकते हैं. नाउ इसके लिए जरूरी क्या था? फॉरेन पॉलिसी के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू इंश्योर द न्यूट्रलिटी ऑफ अदर मेजर पावर्स ऑफ यूरोप. तो इसके बाद उसका फोकस पूरा का पूरा कहाँ हो जाएगा? टू इंश्योर द न्यूट्रलिटी ऑफ अदर पावर्स ऑफ यूरोप. So if this is the main priority or the main objective, so what will be the second objective? Second objective will be to ensure the
neutrality, to ensure the neutrality of other European powers, other major European powers, okay, to ensure the neutrality of other major European powers in case of future conflict between Austria and Prussia. ठीक है? In case of future conflict between Austria and Prussia. Now this is the objective. Okay, neutrality of foreign powers को maintain करना है. Okay, now diplomacy of Bismarck. तो डिप्लोमेसी किस लिए करेगा? न्यूट्रलिटी को इंश्योर करने के लिए. नाउ राइट दिस, डिप्लोमेसी ऑफ बिस्मार्क, डिप्लोमेसी ऑफ बिस्मार्क. एंड यू ऑल नो दैट कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिप्लोमेसी इज टू इंश्योर न्यूट्रलिटी, टू इंश्योर neutrality of other European powers. This was the core objective. Now, how this diplomacy can be seen? So the point one is diplomacy number one. Point one क्या हो गया? Diplomacy number one, पहला diplomacy. Okay, देखो, Russia. There was a conflict at that time between Russia and, okay, there were Polish revolts against Russia. Okay, Polish revolts against Russia, and Russia was engaged in suppression of this Polish revolts. जैसे आज रशिया के लिए चैलेंज क्या है? यूक्रेन. और अगर आप रशिया की जाके हेल्प करोगे तो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर? रशिया विल स्टैंड बाय योर साइड, होगा ना? द सेम हैपेंड. रशिया वाज डूइंग व्हाट? सप्रेशन ऑफ पॉलिश रिवोल्ट्स. नाउ व्हाट विल हैपन? अच्छा, बिस्मार्क या प्रशा सार्डिनिया पिडमॉन्ट की तरह तो है नहीं कि भाई मेरी हेल्प ले लो, ऐसा. नाउ बिस्मार्क विल गो और प्रशा विल गो एंड विल हेल्प रशिया. राइट दिस हियर, प्रशा which is led by Bismarck, Prussia which is led by Bismarck will provide help to Russia. It will provide help and support to Russia. It will provide help and support to Russia. And now what Russia will promise? Russia will promise that it will maintain neutrality in case of any future war between Austria and Prussia. काम हो गया. कहा तुम्हें न्यूट्रल रहना है, बस इतना करो, बाकी मैं मामला संभाल लूंगा. So here what will happen? Okay, what is the result of this diplomacy? Here Russia will promise to maintain neutrality. Russia will promise to maintain neutrality. Russia neutrality maintain करने का promise करेगा in case of any future conflict, in case of any future conflict between Prussia and Austria. Russia will promise to maintain neutrality in case of any future conflict between Prussia and Austria. Diplomacy is successful or not? Yes or no? Diplomacy is successful. Now Russia will maintain neutrality. Now write next point. Great Britain. Great Britain. Great Britain will ensure neutrality or not? The answer is yes. क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन की पॉलिसी ही है अननेसेसरी, वो दूसरों की लड़ाई में कूदता ही नहीं है. मेरी बात समझ गया? पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडेड आइसोलेशन प्लस अच्छा खासा ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल रिमेन न्यूट्रल. सो राइट दिस, ग्रेट ब्रिटेन विल रिमेन न्यूट्रल. और इसके पीछे रीजन क्या है? Zollverein, ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन, ओके, प्रशा एंड ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है, प्रशा के साथ साथ जो ये टेरिटरीज हैं, ओके, Zollverein के थ्रू जो ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है, दिस इज वन रीजन. ओके, नाउ Russia neutral, Great Britain neutral, and for completing this process of unification he will have to fight with
किससे लड़ना पड़ेगा? एक तो ऑस्ट्रिया से लड़ना पड़ेगा, दैट इज द मेन विलन, और दूसरा उसको फ्रांस से भी लड़ना पड़ेगा, फ्रांस से भी लड़ना पड़ेगा, राइट? ही विल हैव टू फाइट विद फ्रांस आल्सो, ओके, बिकॉज फ्रांस वाज आल्सो कंट्रोलिंग सम टेरिटरीज. नाउ व्हाट इज द डिप्लोमेसी ऑफ बिस्मार्क? बिस्मार्क की डिप्लोमेसी क्या है? फॉर एग्जांपल, डिप्लोमेसी ऑफ बिस्मार्क, लड़ना किससे है? ऑस्ट्रिया से. नाउ today also, if as a country, if you will start war without any valid reason, what will happen? The international community will criticize you, okay? They might oppose you, they might stand in the favor of your opponent, ठीक है? So if you want to fight with any other nation, you must need a valid reason for that. एक वैलिड रीजन होना चाहिए, और उस वैलिड रीजन में उस देश को पहले आपको एनिमी की तरफ प्रोजेक्ट करना होगा, ओके, विलन ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ प्रोजेक्ट करना होगा. एंड व्हेन यू विल स्टार्ट वॉर, नो वन विल कम इन सपोर्ट ऑफ दैट नेशन. मेरी बात समझ गया? इफ यू आर फाइटिंग विद द नेशन बी and you have projected this idea that nation B is exploiting the German origin people, nation B is, okay, killing, doing assassination of minorities, and we are fighting with nation B in order to protect the minorities from the atrocities, what will happen? This will give you a valid reason to invade that country. अब बिस्मार्क को क्या चाहिए? वही चाहिए. बिस्मार्क नीड्स दैट वैलिड रीजन. वो वैलिड रीजन भी ये ढूंढ निकालेगा. दिस इज हिज डिप्लोमेसी. सो बिस्मार्क फॉट बेसिकली 3 वॉर्स. ओके, देखो, रेड दिस. प्रशा फॉट 3 वॉर्स. 3 important wars here. पहले चार्ट बना लो, then I will discuss. Prussia will fight, okay, 3 wars, complete the process of political unification of Germany. Prussia कितने wars fight करेगा? 3. ठीक है, वो 3 wars कौन कौन से हैं? आई एम जस्ट राइटिंग द ईयर. बिस्मार्क के पास लीडरशिप कब से आई है, यह बात आपको ध्यान रखनी है. 1861. इसके बाद ये लड़ाई ही करवाएगा. इसकी पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन. तो एक वॉर होता है, दैट इज वॉर विथ डेनमार्क. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप कहोगे कि डेनमार्क कहाँ से आ गया? ठीक है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा कोई शायर है ना? तो अब यहाँ डेनमार्क कहाँ से आ गया? डेनमार्क विल गिव दैट वैलिड रीजन. आपको बताऊंगा मैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ओके, सो वॉर विथ डेनमार्क इन विच ईयर? 1864. दिस इशू आई विल एक्सप्लेन, देन यू विल गेट दैट कैसे प्रिटेक्स्ट मिला, बहाना मिला ऑस्ट्रिया पे अटैक करने का. वॉर विद डेनमार्क, राइट. सेकेंड इज वॉर विथ ऑस्ट्रिया. दूसरा ही वॉर किसके साथ है? ऑस्ट्रिया से, यानी प्रशा एंड ऑस्ट्रिया वॉर. प्रशा एंड ऑस्ट्रिया वॉर, इसी बैटल को कहते हैं, इट वॉज फॉट इन 1866 एंड दिस इज कॉल्ड बैटल ऑफ सेडोवा. बैटल ऑफ सेडोवा, बैटल ऑफ सेडोवा. ये बताओ, प्रशा क्या इटली का भी सपोर्ट नहीं ले लेगा? न्यूट्रलिटी ऑफ इटली याद आया? व्हेन आई विल बी फाइटिंग विथ ऑस्ट्रिया यू विल रिमेन न्यूट्रल. मैं उससे आपको विनीशिया लेके गिफ्ट कर दूंगा. ये भी याद रखो. इटली को भी प्रॉमिस किया था, तुम चुपचाप तमाशा देखो, मैं ऑस्ट्रिया को हराऊंगा, विनीशिया लूंगा और तुम्हें वापस कर दूंगा. तो ये वाले पॉइंट में ये भी आप ऐड कर सकते हो. वन मोर पॉइंट, दैट न्यूट्रलिटी ऑफ, राइट, एक और पॉइंट था ना यहाँ पे न्यूट्रलिटी वाले पॉइंट में. राइट दिस थर्ड, न्यूट्रलिटी ऑफ इटली. बिस्मार्क ने ये भी कर दिया था. न्यूट्रलिटी वाले पॉइंट में ये ऐड कर लो. राइट दिस, बिस्मार्क also ensured the neutrality of Italy. Right? How? Read this, by promising Italy to give Venetia after defeating Austria. By promising Italy to give Venetia after defeating Austria. तो ऑस्ट्रिया को डिफीट करने के बाद क्या दे दूंगा? विनीशिया दे दूंगा. ठीक है, तो एक दूसरा वॉर ऑस्ट्रिया के साथ. और यहाँ पे क्या है? गब्बर सिंह इज डिफीटेड, ऑस्ट्रिया इज डिफीटेड, गब्बर सिंह इज डिफीटेड. नाउ थर्ड वॉर, मेन एनिमी एक और है, वो कौन है? दैट इज फ्रांस. So here Prussia will fight war with France in this year 1870-71 and this is known as Battle of Sedan. इसे क्या कहते हैं? Battle of Sedan.
बैटल ऑफ सेडान, एंड दिस बैटल कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इस बैटल ने कंप्लीट कर दिया। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बताऊंगा आपको। फिर से एक बार समझो यहाँ पे डिप्लोमेसी क्या है। जब प्रशा डेनमार्क से लड़ रहा है, व्हेन प्रशा वाज फाइटिंग विद डेनमार्क, तो इट गॉट द सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। किसके सपोर्ट से लड़ा? ऑस्ट्रिया के सपोर्ट से। दूसरी बार, व्हेन प्रशा वाज फाइटिंग विद ऑस्ट्रिया, ओके, सो इट डिड व्हाट? इट ensured द न्यूट्रलिटी ऑफ फ्रांस। फ्रांस को भनक भी नहीं लगने दिया कि अगला टारगेट तुम्हारा है। ensured द न्यूट्रलिटी ऑफ फ्रांस। फ्रांस को कहा कि आई विल डिफीट ऑस्ट्रिया और तुमको कुछ टेरिटरीज भी दूंगा। फ्रांस रिमेन्ड साइलेंट। अगला नंबर फ्रांस का था। एंड देन व्हेन प्रशा विल फाइट विद फ्रांस, नो एनी अदर कंट्री ऑफ यूरोप विल कम इन सपोर्ट ऑफ फ्रांस। और अगले 20 साल तक फ्रांस का कोई दोस्त यूरोप में नहीं बनेगा। बिस्मार्क का ऐसा माहौल है। फॉर द नेक्स्ट कमिंग 10 years, फ्रांस विल बी कंप्लीटली आइसोलेटेड इन यूरोप। कोई फ्रेंडशिप नहीं करेगा फ्रांस से। फ्रांस बावला हो जाएगा अगले 20 साल में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। आई विल डिस्कस विथ यू। ठीक है, व्हेन आई विल डिस्कस दीज थ्री वॉर्स, दिस इज यू आर ऑल्सो रीडिंग अबाउट द डिप्लोमेसी, about Bismarck, about Cavour, what are the important development, and why I am discussing all these things, there is a reason. For example, there is an NCERT book, write this book, और खरीदना नहीं है किताब को, गूगल से एनसीईआरटी की वेबसाइट से जाके ये सिलेक्टेड चैप्टर डाउनलोड कर लो बस। दैट इज, राइट दिस, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2, राइट दिस, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2, that is textbook in history for class 10, India and contemporary world part 2, that is textbook in history for class 10, textbook in history for class 10, this is textbook in history for class 10, ठीक है, textbook in history for class 10, you can find it on NCERT website। जैसे ही गूगल में सर्च करोगे पीडीएफ का लिंक आ जाएगा, right, you will get this link of this PDF which you are seeing here on the screen, and this is the chapter, the rise of nationalism in Europe। ये क्लास 10 का चैप्टर है। अभी आगे जैसे ही मैं डिस्प्ले करूंगा आप देखोगे कि कितने इंटरवोवन, इंटर रिलेटेड थीम्स हैं इसमें, बिना पढ़े समझ में नहीं आएगा। और नेशनलिज्म कितना इंपॉर्टेंट डिबेट है आज के टाइम में। क्या ये इससे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है टॉपिक? व्हाट इज योर आइडिया? यस, ठीक है। तो फॉर ऐसे मैंने बता दिया आपको। आई विल ऑल्सो डिस्कस मॉडर्न में भी बहुत सारी चीजें नेशनलिज्म की बताऊंगा, बट हियर इफ यू गेट टाइम यू विल ट्राई टू रीड, और सारे फैक्ट्स का रट्टा नहीं मारने लगना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में भी बहुत वैसे लिखा गया रहता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी भी है दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, बट येस यू विल रीड, यू विल गेट एन आइडिया। पढ़ने के साथ आपको एक आइडिया लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ओके, यू विल फाइंड मेनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हियर, ठीक है। जैसे देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताया गया है, नेपोलियन इन्वेड्स इटली 1814 1815, वियना पीस सेटलमेंट, इट हैज बीन डिस्कस्ड इन दैट बुक। आर यू लुकिंग एट द इवेंट्स? आप जब इसको देखोगे, देखो 1860 71 के बारे में बताया गया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इटली यूनिफिकेशन, जर्मनी यूनिफिकेशन, ओके, the nationalities, how the minority rights were affected, all these things have been given, okay। बहुत सारी चीजें इसमें है। रिवॉल्यूशंस R1 R2 R3, ऑल दीज रिवॉल्यूशंस हैव बीन डिस्कस्ड, इनके बारे में दिया गया है। जैकोबिन जिरोंदिस्ट ग्रुप्स के बारे में दिया गया है। देयर आर एन इम्पॉर्टेंट मैप्स ऑल्सो, कैन ऑल्सो लुक एट द मैप्स, मैप्स से भी आप हेल्प ले सकते हो, ओके। दिस इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट दैट आई रिसेंटली डिस्कस्ड विथ यू, ये भी बताएगा। तो देयर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस, ओके, in this chapter, this single chapter is important here, but I've already discussed everything, okay। German Empire, you will find the map here, the process of unification of Italy, the process of unification of Germany, all this has been discussed in this chapter with a special reference, Garibaldi has been given here, okay, Cavour has been given here। तो ये सारे chapters आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो whenever you get time, try to read that chapter, this special chapter number 1 from class 10 NCERT। PDF रख लो, और ऐसा नहीं कि 10 पेजेस को एक दिन में पढ़ना है, नो, रीड 1 or 2 पेजेस, ठीक है। ट्राई टू फाइंड द एसेंस ऑफ दो इंफॉर्मेशन, इस पेज में क्या डिस्कस किया गया है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस इन अ सिस्टमेटिक मैनर,
पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, देन यू विल बी एबल टू रिलेट समथिंग. देयर आर इमेजेस, देयर आर मैप्स, ट्राई टू लर्न. अगर आपको लगता है कि हाँ ये आइडिया इंपॉर्टेंट हो सकता है तो उसको लेना है. मतलब फैक्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं पिक करना है, राइट. ट्राई टू पिक द कॉन्सेप्ट्स, द आइडियाज एंड द एसेंस दैट हैज बीन गिवन इन दैट बुक. मेरी बात समझ गए ना. देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, देयर आर अ लॉट ऑफ नेम्स. So there is no need to memorize all the names and all the facts and informations. Try to get the essence of these, okay, writings. That is a good chapter, very good chapter. I like this chapter. ठीक है, तो इसको आप पढ़ोगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत और हेल्प मिलेगा आपको. You will be excelled in essay writing. Yashashwini, please ask your question. Obviously देखो, this is not taken, this should not be taken for granted. ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि लार्जर टेरिटरी, फॉर एग्जांपल इंडिया का तो जोग्राफिकल टेरिटरी ग्रेट ब्रिटेन से ज़्यादा बड़ा था, बट definitely we failed at one point of time. But here the sense is that, what I mean to say is that, what are the challenges? There are smaller territories, clear, which challenges they are facing. They are facing economic challenges, economic hardships. Trade and commerce is declining, trade and commerce becoming expensive. Plus, okay, these smaller territories are under the control of different nations, different powerful monarchs, and these powerful monarchs are conservative forces, so they will not let the progressive ideas become popular in these areas. Got it? Okay. Economic progress is hampering, cultural development, cultural progress is hampering, right? And now these nations will start realizing that if we all are sharing the common culture, common language, we all are the German speaking states, if we will come together, तो क्या होगा? The cultural bond, cultural unity will increase, economic prosperity will increase, and what will happen? The areas or the territories under control will also increase. Okay. Now if we are separated, if we are fragmented, so we don't have any political identity. If we will be united, we will have a greater political identity. For example, like a powerful nation of Europe, we may emerge. And the same happened when Italy and Germany will become न्यू नेशन इन 1870-71, तो इनके टेरिटरीज पहले से क्या हो जाएंगे? यूनिफाइड मीन्स लार्जर, यूनिफाइड मीन्स लार्जर. एंड यू विल फाइंड दैट बिटवीन 1870 to 1914 these these two new nations will join the race of imperialism. They will also start making colonies. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है? इटली एंड जर्मनी, दे बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ यूरोप. तो अगर ये यूनिफिकेशन हुआ ही नहीं होता तो क्या ये पॉसिबल होता? नहीं होता. आपको पावरफुल नेशन बनने के लिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए, और इस यूनिफिकेशन से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आ रहा है. तो यूनिफिकेशन मीन्स स्मॉलर टेरिटरी क्या बनती जा रही है? लार्जर पॉलिटिकल टेरिटरी. का आपको डिप्लोमेटिक, आपकी एक आइडेंटिटी बन सकती है, नई डिप्लोमेटिक आइडेंटिटी, इकोनॉमिक आइडेंटिटी. ओके, दिस विल हेल्प यू अ लॉट. गॉट इट? दिस इज द बेसिक आइडिया. ठीक है, बट हमेशा ये टेकन इट ग्रांटेड नहीं ले सकते. कई बार कई नेशंस की जोग्राफिकल टेरिटरी बड़ी भी होती है, बट उनकी डिप्लोमेटिक आइडेंटिटी वीकर होती है. So this is not a universal truth, but yes, in this phase, okay, this was true. That if this will happen, it will help a lot. Okay, these countries and nations. So this single chapter you will download. आप download करना, okay, and make it a file, and 1 or 2 pages keep reading. Don't read it in a single day. कोई सिंगल डे में पढ़ने की जरूरत नहीं है. मेरी बात समझ गया ना? एकदम धीरे धीरे आराम से चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, इंटीग्रेट करना है. ठीक है, तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके काम आएगा. नेवर रीड एनी मॉड्यूल विद द स्पेशल ऑब्जेक्टिव कि इससे 2 क्वेश्चन आते हैं या 10 आते हैं. नहीं, पहला टास्क आपका क्या है? डेवलप अ गुड अंडरस्टैंडिंग. देन इन सेकेंड स्टेप यू विल डू फोकस स्टडी. फोकस स्टडी मीन्स किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, रिवीजन पे उतना ज़्यादा इंफेसिस वहाँ देना है. मेरी बात समझ गया ना? जो लोग भी ये सलाह देते हैं कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उस सेगमेंट पे उतना टाइम दो, वो पहले ही सारा टाइम दे चुके होते हैं. मेरी बात समझ गया ना? तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना है. यूज योर अटेम्प्ट वेरी वाइजली. एक बार अटेम्प्ट खत्म होने के बाद क्या होता है? पुनर्जन्म लेना पड़ेगा सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए. मेरी बात समझ गया ना? तो इफ यू बिलीव इन दिस आइडिया ऑफ रीबर्थ, देन ओके.
ऑलवेज ट्राई टू यूज योर अटेम्प्ट्स वेरी वाइजली, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। मेरी बात समझ गए? कॉन्फिडेंस है, तैयारी अच्छी है, ठीक है, 21 ईयर्स में अपियर होना है, तैयारी अच्छी नहीं है कोई बात नहीं है, 20 to 23 ईयर्स में आईएएस बन जाएंगे, कोई रेस में नहीं शामिल होना है, ठीक है। नहीं ठीक है, देखो हर आदमी का क्या होता है कि अपना एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है बेस्ड ऑन आवर प्रिपरेशन, बेस्ड ऑन आवर स्ट्रेंथ। ओके, सो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इज नॉट गुड हियर। मेरी बात समझ गए? तो यू टेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन, ओके, योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। अब किसी को ये लग रहा है कि यार मेरे को तो जॉब चाहिए ही चाहिए इस साल, और इसीलिए यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूँ, तो वैसे जॉब नहीं मिलेगा, आपका एक अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो धीरे धीरे राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव करो, चीज़ों को सीखो, और एक चीज़ हमेशा करो, दैट शुड बी इन योर रूटीन, दैट एवरी डे यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस एमसीक्यू एटलीस्ट 10 to 15। इतने क्वेश्चन करो ही करो डेली, दिस शुड बी इन योर डेली रूटीन। It does not matter these are the questions of history or polity or geography or economy, but at least 10 to 15 MCQs daily practice karo. Okay, so you will be in continuous practice of solving MCQs, और दिसंबर जनवरी के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, बढ़ा देनी है। मेरी बात समझ गया ना? प्रैक्टिस को स्टॉप नहीं करना, बिकॉज दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जाम, बहुत अच्छी मेंस की तैयारी है, प्रीलिम्स नहीं होगा, क्या होगा? 2 या 3 प्रीलिम्स नहीं होने के बाद विल गेट डिस्करेज्ड, आपको लगने लगेगा कि यार मैं लग रहा है राइट कैंडिडेट नहीं हूँ, ये भी फीलिंग आएगी, जबकि पता चले कि आप सबसे सुटेबल कैंडिडेट हो। ओके, तो प्रीलिम्स शुड बी योर प्रियोरिटी, ठीक है, सबसे पहली प्रियोरिटी प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। चलिए, और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, यस प्लीज। देखो, द अप्रोच टुवर्ड्स, फॉर एग्जांपल इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लास आई डिस्कस्ड वन आंसर टुडे, एंड कितने लोग थे मॉडर्न इंडिया में, थे आप में से कुछ लोग? ओके, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, when I will finish this chapter I will discuss 2 or 3 answers with you, and then you will get the idea that how to write answers, which format we should, ठीक है ना? So let me finish this chapter, Unification of Germany, and then I will discuss at least 2 or 3 questions, then you will develop the idea that how to write the answers, which format we should choose to write the answer. Got it? Okay, तो ये चैप्टर फिनिश करने के बाद मैं आंसर राइटिंग पे आपके साथ डिस्कस करूंगा एटलीस्ट 40-45 मिनट्स और 1 आवर, देन यू विल गेट द आइडिया, ठीक है। और कोई डाउट? Okay, so Saturday and Sunday there will be no world history class, and Saturday, on the timing of the modern history, I am going to take an exclusive lecture of the modern Indian history topic that will be related to the princely states. So I will share the link, so those who wish to join they can join the class from 10:30, ठीक है। ये थोड़ा exclusive lecture means comprehensive lecture होगा, we will integrate a lot of things, okay। So from 10:30 to 12:30 I will provide the link, so those who wish to join can join, clear? That will be exclusive lecture, okay। चलिए, thanks to all of you.